गवर्नमेंट का वर्क क्या आएगा? ये लिखने का कहाँ से मैडम? हाँ वो हमको पढ़ा नहीं लीगल एप्टीट्यूड तो बच्चों बच्चों को पढ़ाते बोली गवर्नमेंट फंडामेंटल लीगल फिजिकल एनालिटिकल लाइसेंस पार्ट्स पार्ट्स बच्चों तक पढ़ा। अभी इसके लिए अलग पढ़ा लीगल एप्टीट्यूड उसके लिए लॉयर लाएगा पढ़ाएंगे। कार्तिक सर कौन पढ़ाएंगे? कार्तिक सर तो फिर पढ़ा मेरा नंबर दे फिर तो पीएचसी भी एलएलबी हो गया पीएलएलबी ये 5 साल तक तो पीएचसी एलएलबी किया You often hear or read about it in newspaper or on the television. Have you ever thought about what a government is? Do you know the role it plays in our life and the important thing it does for the people? The government of country makes laws and everyone living in the country has to obey these laws. contribution time छोड़ दो पहले 5 मिनट लेट है ये बोल ये बता Geography plays an important role in shaping the life and history of any society. It helps us to recognize the differences in cultures, political system, economies, landscapes, and environments across the world. It also helps us to establish links among them. Geography provides an ideal framework for relating to other fields of knowledge too. If we know the geography of a country, we can understand what happened in history. बीए करें तो सीरियस भी दे सकते हैं अटकड़ भी दे सकते हैं सब 12वीं के बाद एनडीए में सिर्फ 11वीं 12वीं का मैथ्स उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जो भी मैथ्स लगता है ना वो कौन से लेवल का 10th लेवल मैं तो फालतू में प्रैक्टिकल में जाऊँ कुछ जर्नल सबमिट कुछ करना है मैं तो जाने सबसे अच्छा बीए करना हाँ It is from studying geography that you get to know why. After Ice Age, changes in environment must have taken place. As a result, many dense forests. कैपिटल क्या Manipur in- मणिपुर का कैपिटल मणिपुर का कैपिटल मालूम है मुझे in time. तो मैं बोला तू बैठ If we know the geography of a country, we can understand what happened in history. In this lesson, you will read that early humans made bows, arrows, and other small tools. It is from studying geography that you get to know why. After Ice Age, changes in environment must have taken place. Result, many dense forests might have become grasslands. Can you imagine what must have happened? Yes, it led to a growing population of grass eating animals like the deer, goat, sheep, and herbivores. घास नहीं खाता उसका herbivores को जो है ना टीथ है ना शार्प ब्लैक टीथ रहता है herbivores You also know that these animals can किलो कितने लोगों को मालूम है antelope. देखिए किधर बनते हैं मैमल मतलब क्यों मैम मतलब जो डायरेक्ट जानवर को बच्चे पर मालूम है मेरे मालूम है क्या
वो जो खाते हैं ना अपन, पेट में निकाल के वापस बाहर निकाल के वापस चू कर, उसको बोलते हैं रुमिनेशन। हाँ, द्रवण पार्टी, समझा ना? कट चूवर्स, ये लोग भी ऐसे ही है, खाते हैं बाहर निकालते रात को फिर वापस चू। आगे। So hunting them was not easy with heavy weapons. These light stone weapons, which the early humans had invented, helped them in their survival. Do you know that the Indo-Ganga plain is the most fertile land in India? This is because big rivers like the Ganga brings an abundant supply of fresh water for drinking and irrigation. That is why this land became the place for establishing big empires like those of the Mauryas, the Guptas, and the Mughals. उसके बाद और इसके बाद The Maurya yeah. The Maurya चाणक्य देने और उन्होंने चाणक्य अंदर जब ये सीखे उन्होंने फिर राजपाट चाणक्य गुप्ता, गुप्ता इसके बाद गुप्ता का मुगल, मुगल पता सबसे पहला मुगल बना, बाबर उसके बाद अकबर और उसके बाद शाहजहां औरंगजेब उसके बाद अकबर उसके बाद साइंस पढ़ा, स्टोरेज वाले में हाई क्वांटिटी में बट the Old Stone Age, Paleolithic Age. During the Old Stone Age, Paleolithic Age, human being lived in foothills of the mountains, preferably near a river. Rivers provided them with drinking water as well as food in the form of animals that came there to quench their thirst. They could find caves for shelter on the foothills, so their basic needs of food, water, and shelter were satisfied easily at such spots. Do you know that early humans had to push out wild animals, especially the giant bears, from the caves in order to make a home for themselves? Just imagine how difficult and dangerous life the primitive people lived. To cover and protect their bodies from heat and cold, three these primitive humans wore bark from the trees and the skin of animals. बेसिक Which they dried under the sun. You must appreciate the role of environment plays in sustaining the human beings even today. There are some places in India like Andaman and Nicobar Island where certain tribals live like the early human even today. Early humans lived in caves and made paintings depicting hunting scenes on the wall of these caves. Paintings of animal chase, especially big animals like bison and reindeer, can still be seen in Bhimbetka caves in Madhya Pradesh. Madhya It is quite possible that this practice of drawing on the walls was some kind of ritual that ensured that they would be successful in their hunting expeditions. It is also possible that it was creative expression to make their surroundings beautiful by making an artistic expression of their hunts. किधर आया बिबिट का किधर आया रेजन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का क्या बोल गया कितने डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश स्टेट है ना, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है?
Next. Bhimbetka is an archaeological World Heritage Site located in Raisin district in Madhya Pradesh. The Bhimbetka shelters exhibit the earliest traces of human life in India, which is of prehistoric times. A number of analyses suggest that at least some of these shelters were inhabited by man for in excess of 100,000 years. Some of the Stone Age rock paintings found among the Bhimbetka rock shelters are approximately 30,000 years old. कितना पुराना है? बिटका के बारे में कितने लोगों ने पहली बार सुना? यार, इसको इतना भी रखना है। अगर कट कर उसको, कब से तुम मुझे आया कितने बार आता है चॉकलेट गेज ये पढ़ो मेटल्स चॉकलेट गेज में मेटल यूज करते थे क्या यूज करते थे Humans had come a long way from their food gathering and stone implement days, yet they were not satisfied. Soon they discovered a metal called copper. This period, copper. This period now came to be called the Paleolithic Age. In this age, people began to use copper for making implements. Do you remember reading that in order to make clay pottery, the early सर humans 940 used का इसका अपडेट आ गया fire? कॉपर का सिंबल क्या ये देखना आ गया ये पढ़ो As the early humans started discovering ब्रॉन्ज से क्या अलॉय है ब्रॉन्ज में क्या क्या रहता steel, ब्रॉन्ज कॉपर और जिंक as the early humans started discovering new materials, they started experimenting with them. Copper was mixed with other metal like zinc, tin, and lead to produce bronze. कॉपर के साथ अगर टिन है कॉपर के साथ अगर टिन है तो उसको क्या बोलेंगे ब्रॉन्ज कॉपर के साथ जिंक है तो उसको क्या बोलेंगे ब्रास क्या बोलेंगे Bronze. उनको उस जमाने में मालूम था क्या ये सब यूज कर सकते हैं आगे The age in which people started using bronze came to be known as Bronze Age. The tools made of metal proved to be much more effective than the earlier stone implements. Metallic knives and axes were helpful in cutting down trees, and more land was cleared for agriculture. The period when humans used both metals and small pieces of stone यस चालकोलिथ क्या बोलते हैं इसको हाँ implements of this age have been found at गिरी Brahmagiri, करके इलाका है वहां पे देखने को मिलता Nawab Toli near Narmada, as well as in Chota Nagpur किधर Plateau. आता है छोटा नागपुर प्लेटू कौन सा किधर आता कौन से स्टेट में आता नहीं बोलेगा चेक करो छोटा नागपुर प्लेटू किधर आता मुझे लगता है झारखंड है हाँ था सर झारखंड है ना ठीक है सर लगा के कॉल करा दो उसको कर देंगे आ गया
If you happen to be anywhere near this area, try to see the excavated sites and make groups. Beginning of community life. IBC. What is the full form of IBC? So छोटा नागपुर किधर आता? मेरा राइट था ना? हुशार है? झारखंड का कैपिटल क्या? मध्य प्रदेश का? आगे. Agriculture, mixed farming, development of tools, and discovery of wheel all led to a settled life, which we may call the beginning of a village life. इसका एडजेक्टिव है रूरल. क्या? सिटी का एडजेक्टिव अर्बन. सिटी का एडजेक्टिव क्या? आगे. By now, the groups of human beings that had settled together had become larger, and a larger group needed someone who could maintain law, order, and some discipline. So it was natural that those one such person amongst themselves who could सर lead them. छोटा नागपुर सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, बिहार और वेस्ट बंगाल तक एक्सपेंड करता है. इट्स अ प्लेटू. सर वो चेंज हो गया हमारा, खराब ही थोड़ा सा मोबाइल. आगे. मुझे छोटा नागपुर काफी दूर तक फैला हुआ है, झारखंड ही नहीं. Various groups decided their own method of choosing a leader. The leader was more often the oldest person Sorry, in sir. the group I and brought it again. sometimes वो से छोटा नागपुर स्क्रीन खराब है ना सर. Plateau in eastern India, which covers much of Jharkhand है ना, and छत्तीसगढ़ भी है, ओडिशा भी है, वेस्ट बंगाल और बिहार. ये ज्यादा करके झारखंड है ना. महानदी सब रिवर याद रखो बच्चों, सभी में है ये. एक ऑप्शन नहीं, कई ऑप्शन है. 65,000 square kilometer. आगे. the leader looked after the law and order of the settlement. If a dispute arose between any two members of the group, the leader would act as the mediator. झगड़े हो गए दो लोग में मेडिएटर का काम. Gradually, these settlements became even larger. Towns and cities started coming up. Do you know that the area around the rivers Saraswati and Indus were the places where the first Indian cities came up around 2500 BC? ये मतलब क्या? दूसरा भी ना है. इंडस सरस्वती. हड़प्पा भी डिस्कवर करा ना. मोहनजोदाड़ो भी और सर मुर्दों का टीला. माउंट ऑफ दी माउंट स्पेलिंग वाला MOUNT. माउंट ऑफ दी. इसको मतलब मोहनजोदाड़ो. क्या बोलते हैं? हड़प्पा का मीनिंग क्या? आगे. Religion. Human beings all over the world have fear of the unknown. Any event which was not understood by them was held in awe and soon became sacred. The same happened with the early humans. The earth assumed the status of a mother figure, क्या रहता? मैटरनल. क्या रहता? which provided food for all living beings, her children. The sun gave life and warmth. It was also reassuring after the dark night. Did you know क्या? नॉक्टर्नल. देखो क्या लिखा. दिख रहा क्या लिखा? नॉक्टर्नल. क्या क्या स्पेलिंग? NOCT. डे ना डे. इसका एडजेक्टिव है ड्यूरिनल. क्या स्पेलिंग देखो? DIURNAL. DIUR. For the same for the moon, stars, rains, etc. People started worshipping them. They started लोग sacrificing लूनार. सन का solar. ना. उनको भी पूछते हैं. They started sacrificial rites and sang songs in praise of these natural objects. There were magic practitioners who claimed they could prevent people from coming to harm by them.
Some individuals decided to perform sacrificial rites and pray for the community. Such person came to be known as priest. People had realized that death was a journey from which people never return. So they began to follow the practice of making graves for burying their dead. डेड को बरी किया लेकिन अभी भी वैसा चलता सर हड़प्पा का मतलब है फूड ऑफ पशुपति। सर हड़प्पा का मतलब है फूड ऑफ पशुपति। फूड ऑफ पशुपति है सर वाइडली पूरा पशुपति पशुपति है परो बोलते उसको क्या बोलते उसको उसका पशुपति। बॉडी ऐसा है कितने साल पुराना बॉडी सिंधरी लैंग्वेज क्या मैंने एक लैंग्वेज लिखा है सिंधरी लैंग्वेज सिंधरी ये क्या है लैंग्वेज सिंधरी हाँ पहली बार सुना लैंग्वेज का एडजेक्टिव क्या लिंग्विस्टिक ओके People had realized that death was a journey from which will never return they covered the graves with large stones called megaliths. क्या Sometimes बोलते हैं इसको इसके ऊपर से पत्थर लगाते हैं सब लोग गाड़ते ना कैसे गाड़ते हैं मैंने देखा गाड़ अभी हम लोग को गाड़ते ना तो ऐसा खोदते हैं ऐसा 10 फीट खोदा ना खोदा 10 फीट खोदने के बाद क्या करते हैं ऐसा खोदते हैं अंदर ठीक शेप तो डेड बॉडी को उसके अंदर रखते हैं नहीं समझ और यहाँ पत्थर डालते हैं बड़ा पत्थर डालते हैं उसको क्या बोलते हैं मेगालिथ तो क्या करते हैं इंडिया में ऐसा करते हैं इंडिया में समझो ऐसा यहाँ बॉडी को डाल दिया ना तो इधर एक स्लैब जैसा पत्थर डाल और जो बड़ा पत्थर है उसको क्या बोलते हैं मेगालिथ क्या बोलते हैं उनको देखा तो फ्री में देंगे चला गया Long age and beyond. As you have learned, human culture and civilization has undergone several phases of development. बोले सेरिस को लेकर नवोदय का क्या सब है नवोदय का किसका एग्जाम्पल नवोदय का पर तेरा कल है Incredible. आगे As you have learned, human culture and civilization has undergone several phases of development. The earliest human beings started making tools with stone. Later, human beings discovered metals, which proved to be more useful for making tools. Copper, bronze, and iron were discovered in that very chronological order. The discovery of iron was very important landmark in human civilization. It helped in making tools that were more lasting and durable. Later, other materials came to be used. People learned to make alloys, which are made up of two or more metals in fixed ratio. Brass is an example of an alloy. Then we learned how to make steel by adding carbon to iron. आयरन को कार्बन ऐड किया तो स्टील बनता आयरन को क्या ऐड किया तो And much later, modern science gave us a very useful material called plastic. Plastic is still used for making. समझ लो आयरन अच्छा है क्या प्लास्टिक अच्छा प्लास्टिक अच्छा क्यों बायोडिग्रेडेबल नहीं रहता क्या नहीं रहता 10 साल रहेगा तो कैसे पड़ेगा आगे Plastic is still used for making all kinds of tools and objects of everyday use. It has many advantages over other materials. However, lately it has been found to have a negative impact on our environment. Therefore, its use is being restricted. I'm sure you have heard about the ban on plastic bags. The scientists are now trying to discover a biodegradable plastic. बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्लास्टिक क्या है
चाय भी पीते ना, कप में मत पीते हो। गर्म चाय जब वो कप में जाता है ना, सब छोटे वाले प्लास्टिक में, वो प्लास्टिक का से कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? चाय पीते ना तो ग्लास में पिया, कांच के ग्लास में, स्टील के ग्लास में, वो जो छोटा नहीं करता। आगे। Presents its own set of challenges. These have to be addressed as humans evolve to the next stage. इसके पप्पा है जो दे करके। Let, let us now study the various stages of human development. आगे। डिजिटल। Hunting stage. Many clues that have been provided to us by archaeology have helped us to reconstruct our prehistory. This type of life was called primitive because people depended on nature for the life. These early human beings began life as hunters, preying upon beasts, birds, तो क्या खाते थे? birds, Birds, fish, and insects for food, just as wild animals in the jungle. में एक ट्राइब है, उसका नाम है सेंटिनल्स। कोई आज तक वहां पहुंचा? They lived only as hunters for hundred of thousands of years. This stage in history was called the Stone Age. Stone Age. This period was also marked by tending of domesticated animals. एनिमल्स बोले, एनिमल को वेल बोले। This gave people an assured food supply and also new food items like milk, butter, and cheese. निकल गया ना, उससे बटर बनाने का उनके दिमाग में कैसे आया सर? आदमी के दिमाग में मिल्क से बटर, बटर से चीज, इतना बड़ा इंसान। दही बनाने के पहले थोड़ा दही लगता है ना, वो कहाँ से? दही को मुर्गी पहले मक्खन पहले। बाद में डिस्कस आगे। This gave people an for the people life was much more secure now than it had been when they were hunters. Besides, tending of animals was much lighter work than hunting. People had leisure to think about other matters, but they still had to live like nomads. क्या? कबीला, nomads. Moving from one place to another, they had to look for new pastures for their cattle when the पैस्चर जो वर्ड है ना, वो पैस्चर ये वर्ड पैस्टोरल से आता है, याद रखो। डोमेस्टिकेशन, गाय भैंस बकरी पालना। पैस्टोरल देखो, पैस्टोरल वर्ड किसका एडजेक्टिव चेक करो। वो पैस्टोरल वर्ड का नाम है पैस्टोरल, PASTORAL। आगे। they had to look for new pastures for their cattle when the previous ones became bare eaten by the animals. भी एनिमल को पालना तो उनको खाना भी देना पड़ेगा ना। देखो मैंने पहले बोला विलेज का एडजेक्टिव क्या, टाउन का एडजेक्टिव क्या रहता? इंग्लिश आना अच्छा इंपॉर्टेंट है। Village life, rural. With the advent of agriculture came the opportunity for settled life. People discovered that they could priest या teacher, कंट्री को ही बोलेंगे सर कुछ, और प्रीस्ट को ही बोलेंगे, बराबर है। एक्चुअली पैस्टोरल जो जाता है ना, वो रूरल एरिया के साथ कंट्री साइड। देखो चलो, कंट्री विलेज का भी एडजेक्टिव क्या रहता? पेपर में बात कर
कंट्री का भी ऑब्जेक्टिव क्या रहता? आगे These techniques enabled them to grow their own food at one place. Now they have permanent settlements, which later took the shape of villages where civilization, in the modern sense, was born. These can be termed as the rulers. Town life, urban. From rural life in villages and agriculture, human beings moved towards urbanization. At this stage, there was an immense growth in the population. Human beings were no longer food gatherers, they were now food producers. चालू किया ना टाउन लाइफ में आगे The groups of families became larger and societies were formed. Now there was no need for every family to work in the fields and produce their own food. शेतकरी क्या करता? घर का आधा आदमी काम करता ना, कितने लोग शेत में देगा? कोई पानी भरता, कोई ग्रुप नहीं करता, घर के सारे आदमी को क्या करना पड़ता? काम करना। Those who were weavers, potters, or carpenters exchanged their products for food. उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? Barters. Exchange. अभी हमारे महाराष्ट्र में किसी भी विलेज में ना, अभी वो वाघोली का बाजार लगा। क्या लगा? वाघोली तो बहुत बड़ा हो गया, बाहर से लोग हैं। कोई मिर्ची बेच रहा, कोई कांदा बेच रहा, कोई लहसुन बेच रहा, कोई अदरक बेच रहा, कोई फ्रूट बेच रहा, कोई किराने का सामान बेच रहा। तो ऐसा अलग अलग चीजें बेचते हैं ना सब बाजार में। तो बाजार दोपहर तक लगता। दोपहर के बाद क्या होता है? इनके पास सब कुछ ना कुछ बचता। तो जो जिनके पास मिर्ची बचा ना, वो क्या करता? ये मिर्ची वाला वो थोड़ा थोड़ा मिर्ची सबको देता। अदरक वाला क्या करता? अपना अदरक ले लेता, वो थोड़ा थोड़ा अदरक सबको देता। कांदा वाला क्या करेंगे? कांदा वाला वो थोड़ा कांदा कांदा सबको। घर जाएगा तो हाथ साफ कर लिया। सुबह आया, जो बेचा बेचा दोपहर था। दोपहर के धूप निकलने के बाद क्या करते हो लोग? जो बचा जा रहता है मेरे पास, वो चीजें क्या करता हूँ? सबको दे देता। अरे हाँ क्या नहीं? इस शहर में ऐसा होगा, छोटा छोटा देहात है ना, उसमें बात कर। There was a great improvement in their lives. Discovery of metals had led to specialization in preparing crafts. Some artisans had better skills than others did. This led to the society's satisfaction into skilled and semi-skilled craftsmen depending on the skills they possessed. By this time, metals like copper and bronze had been discovered. These were being used in producing articles essential for a comfortable life. Human beings. Human मैं भी बता आपको, आपको पहले बताया ब्रॉन्ज किसके अलावा है बच्चे लोग? copper or कॉपर और ब्रॉन्ज। कॉपर और सर ये सरफेस पे मिल जाता है ना, ये डिप नहीं करना पड़ता। human beings use these skills in making crafts like pottery, क्या making of pots. कुंभार क्या बोलेगा? कुंभार गली अलग रहता है ना हर गाँव में। कुंभार है और उसने मट्टी बुन के रखा क्या, और उसने पॉट्स बनाया। क्या बनाया? अरे क्या बनाया? जोर से बारिश आई, पहले क्या उठा के ले गया? बाद में क्या उठा के ले गया? मट्टी। क्यों? पॉट्स बना बनाया ना, तो वो पहले समझ लेगा ना। आपको समझ में है सर? इसके पीछे का फिलोसफी बोलो। सर एक कुंभार है पॉटरी का, उसने कुछ बर्तन बनाए मट्टी के, और कुछ मट्टी उसने गोंद के रखा। जोर से बारिश आई तो पहले क्या उठाएगा? बने हुए बर्तन। ऐसा क्यों बोला? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का फिलोसफी क्या है? The bird in the hand is what two in a bush. I just wanted to say Bird in a hand is two in bush. two in the bush. नहीं समझा? अरे अपने हाथ में एक बर्ड है ना, वो बर्ड इंपॉर्टेंट है क्या बुश में का बर्ड इंपॉर्टेंट? A bird in my hand is worth two in the bush. मेरे हाथ में एक बर्ड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुश के अंदर तो है। एक्चुअली हाथ का छोड़ के दूसरा पकड़ देने में, समझा क्या? People will get together at a convenient place to exchange their products. Even the farmers would come to sell their surplus grains and buy other necessities. These activities happened at a central place. At this stage of civilization,
People looked for more than just satisfying their need for food and engaged in other activities such as weaving, pottery, and metalworks. It was also the stage when iron was being discovered. लेदर में तो मालूम है ना तुम्हारे को चमड़े का मेसनरी मतलब प्लास्टिक गवंडी जिसको बोले क्या बोलेंगे गवंडी का काम करता है उसको मेसनरी क्या बोलते हैं उसको नहीं क्या सीमेंट का ईट लगा के नहीं क्या घर बनाता उसको क्या बोलेंगे It was also the stage when iron was being discovered. Now there ये are टाइम पे आयन मिलने लगा क्या मिलने लगा यूरोपियन क्लाइमेट जो यूरोपियन कंट्री आगे क्यों गया उनको कोल माइंस और आयन इसके लिए ब्रिटिशर्स वो लोग हम लोग जब तलवार से लड़ रहे थे उनके पास बंदूक गई नहीं समझ में ब्रिटिश हम पे क्यों रूल कर पाई एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी जब हमारे पास हम तलवार से लड़ रहे थे तो उनके पास क्या था क्योंकि उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना वहां पे उनको कोल मिला और आयन मिला क्या मिला ईस्ट यूरोपियन टाइम now there arose a need of structure and categorization into smaller and specialized groups. मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना तो बोलते थे कि पॉपुलेशन इज अ पेन क्या बोलते थे पेन पेन मतलब नुकसान और अभी जो पढ़ा रहा ना कि पॉपुलेशन इज अ पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ना 1/6 इंडियन है वन सब 6 आदमी को बिठाएगा ना पूरे दुनिया के 6 आदमी कौन मिलेगा तुम्हारा तो जापान चाइना चाइना इसीलिए जापान से क्यों पब्लिक कर इसके लिए आगे भाई जापान से क्योंकि जापान में लोग कम रह गए और चाइना में लोग बढ़ गए तुमको मालूम 3/4 चाइना को जापान रूल करते 3/4 चाइना किसके हाथ में था जापान अभी वो जापानीज मियाँ बीवी बैठे गए और वो चाइना वाला जो है ना वो हथगाड़ी ले गया ये हाल था घोड़ा गाड़ी नहीं क्या बोला हथगाड़ी कैसा बोला घोड़े के जगह पे आदमी रहेगा और वो क्या करेगा तो जापानीज के 2 बैठेंगे पीछे और चाइना वाला क्या करेगा भागेगा ये हाल था चाइना नहीं नहीं हथगाड़ी टाइप रहता है रिक्शा टोंगा रिक्शा नहीं क्या 2 लोग बैठ सकते हैं और टोंगा कुड़ुक 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 भागता है 10 सेंटी घोड़े के जगह पे क्या रहेगा चाइना के लोग क्या करेंगे वो आदमी रहने का और उनके पीछे कौन बैठने का जब जापान में मतलब सर जो बोला उसका आंसर समझा गया चाइना का पॉपुलेशन बढ़ गया तो जापान डूब गया जापान को ऐसा चाहिए एशिया पे राज करे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसलिए हर एक बड़े कंट्री से लड़ रहा था जैसे तो कि जापान आगे बढ़ रहा था ना तो इसके लिए तो अमेरिका ने उनके ऊपर बॉम्ब डाला हिरोशिमा और हिरोशिमा ये मिलिट्री सेक्टर क्या था और फिर 2 दिन के बाद नागासाकी जो कि सिटी था क्या जरूरत थी डालने का हिरोशिमा तो मिलिट्री सेंटर था ठीक है एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर लेकिन फिर 2 दिन के बाद सिटी में डालने क्या जरूरत आज भी उनके बच्चे टेढ़े वाकड़े पे थे वो टाइम पे जापान इतना आगे था कि डॉलर से भी आगे उनका रेट जापान का जो करेंसी था ना क्या था ये राज कपूर का गाना था मेरा जूता है हिंदुस्तान सर पे लाल टोपी फिर भी दिल है हर चीज बड़ी जापान मेरे पॉकेट में जो आपको नेल कटर देखो ये नेल कटर पे क्या लिखा था पढ़ रहे नेल कटर पे क्या लिखा मेड इन किधर देख कौन बोलेगा नेल कटर किसका बनता नहीं वहां का आदमी तो बहुत छोटा डिक्टेटर है और ऐसा आदमी है ना डेंजर जो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है बहुत छोटा है हाइट में और उसको पूरा इतना प्रोटेक्शन है ना उसके टॉयलेट का भी इधर हाँ किसका ये मेड इन कोरिया रहता है किधर लिखा है मेड इन कोरिया जितने भी नेल कटर है ना ओरिजिनल मेड इन कोरिया लिखा है और कोरिया तभी जापान का पार्ट कोरिया किसका पार्ट था बाद में कोरिया हो गया फिर वॉर हो गया तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया तो हो गया कोल्ड वॉर में क्या हो गया
ईरान इराक तो हो गया, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान को कौन हेल्प करता है? अमेरिका। इंडिया को कौन हेल्प करता है? रशिया। ये लोग क्या करते थे? झगड़े लगाते थे और आर्म्स एंड एमिशन बेचते थे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को रशिया, साउथ कोरिया को अमेरिका, ईरान को रशिया, इराक को अमेरिका। तो दो कंट्री के बीच में झगड़ा लगाने का और आर्म्स एंड एमिशन बेचते, उसको बोलते थे कोल्ड वॉर। क्या बोलते थे उसको? अपने इलाके में झगड़ा नहीं करेंगे, दूसरे जगह झगड़ा करेंगे, वॉर करेंगे और उनको आर्म्स, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में वॉर है, उधर वॉर है, यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट करता है। तो नाटो में क्या बोलते हैं? नाटो, यूक्रेन का नेटो नाटो, का पार्ट नाटो, नाटो, नाटो बोलो गाना में। सर गाना भी कितना बजे, क्यों उसको ऑस्कर में? सर बहुत इंटेलिजेंट बात बोली थी कि जर्मनी यूनाइट कर गया क्योंकि वो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान यूनाइट नहीं कर सकता, दोनों लोग हैं। जबरदस्ती ये जरूरी और वैसे जर्मनी को रशिया हेल्प करता था, वैसे जर्मनी को अमेरिका। वो लोग सबसे पहला लेथ मशीन जो बना ना वो जर्मनी, सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ जर्मनी बना, लेकिन उनके पास कॉलोनीज नहीं, पूरे कॉलोनीज, एशिया के कॉलोनीज इंग्लैंड में था, नहीं मिला बीडिंग कोरिया की तरह, लाइट में देखो। और एशिया के कॉलोनीज किधर बने? एशिया के कॉलोनीज किधर बने? इंग्लैंड के पास। और अफ्रीका के कॉलोनीज फ्रांस के पास। एशिया के कॉलोनीज किसके पास बने? और अफ्रीका के, और एक कंट्री था डच, जो इंडोनेशिया वाला, और एक कंट्री था पोर्चुगल जिसके पास गोवा था। तो ये सब कंट्री कॉलोनीज थे। जर्मनी डेवलपमेंट किया लेकिन कॉलोनीज नहीं थे, करके वो, ठीक है। पैसा नहीं देने वाला। तो कहीं